फ्रेंड्स, मैं हूं सुधा झा। मेरा प्रोफेशन है टीचिंग। फॉर लास्ट 22 इयर्स मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ बच्चों। तो चलिए मैं और आप इकोनॉमिक्स की जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं। Hello, good morning everyone. Today's topic is motions of the earth. Now, what do we include in motion of the earth? When we speak about motion of earth, it means we are talking about rotation and revolution. We are talking about rotation and revolution. So, rotation means when the earth is spinning around its own axis, and revolution means when the earth moves around the sun on its own orbit. So, rotation is on its own place when the earth moves, correct? But when it rotates on orbit, then it becomes revolution. Rotating at its own place is rotation, and when it is moving around the sun on its own orbit, that is revolution. Now see, what is rotation? Rotation actually means when the earth spins around its own axis, it is called rotation. But as you know that the earth is tilted at an angle of 23.5 degree, naturally when it rotates on its own axis, it makes the northern and the southern hemisphere lean in the direction which is away from the sun. So the part which comes in the front, maybe the northern or the southern, that will have the day, and the remaining part will have the night. So the part which comes in front of the sun is the day. The part which is hidden at the back of the earth, it is night. Let us understand this. First is how the earth rotates. The earth rotates from west to east. See here, you can see the cursor here. It's moving from this side to this side. Always earth rotates from west to east. But we feel that the sun rises in the east. Take a ball in the hand and go on turning from west to east, and you see where is Arunachal Pradesh. As it comes fast, you see the sunlight enters here. That is why sun appears us to rise from the east. So this is how rotation on its own axis, and earth rotates from west to east. The part of the earth, this is a straight, I am showing you the figure, but actually it is a little bit tilted. So tilted can be seen with this line, and at the bottom also the line, correct? So this shows an angle of 23.5 degree. The part which is getting the sunlight directly from the sun will have the day. The part which is hidden at the back will have the night. So as earth goes on rotating, move करता है धीरे धीरे, जैसे जैसे वो घूमेगा, so the part which comes in front of the sun will have the day, and the remaining will have night. So sun is not moving away from the place. It is only the earth which takes a turn. Just see one experiment you can do at home. If you have a globe in the house, take a small globe, keep it on the table. Make the room very dark. Let your father, mother, brother, sister, everyone be present there. Take a small table lamp. Just see in the picture how it is placed. You also place the globe and the table lamp in front of each other. You mark a certain point, like where is India, you just mark a point I or P, depends on you, correct? And then you show to everyone in the dark room, just see P is visible here, and let the table lamp be on. So P is in front of it, the P part full gets the light. It means that full area is having day. As soon as you go on moving, it moves and the light of the table lamp becomes less and less. It means it is becoming dusk and night, करेक्ट? रात हो रहा है धीरे धीरे. फिर वो जब पीक पॉइंट या आई पॉइंट आपने लिखा है, वो जब पीछे की तरफ चला जा रहा है, तो इंडिया पर लाइट नहीं आ रही है टेबल लैम्प की, इंडिया में क्या हो जाएगा? नाइट. फिर आप घुमाओ, इट कम्स इन फ्रंट ऑफ द टेबल लैम्प, इट हैज अ डे. दिस इज हाउ डे एंड नाइट इज बीइंग डन. So today in front of your father, mother, brother, sister, make the room very dark in the night. Take a globe and table lamp and try this experiment. The day and night will be very clear. Now we should know what is revolution. As I said in the starting, the movement of the earth around the sun in the fixed path, which we call it as orbit, is known as revolution. So earth, already I have said you, it revolves from west to east, that is anti-clockwise.
So it completes one revolution in 1 year, and actually 1 year is equal to 365 1 by 4 days. 365 1 by 4 days, or we can write like this. Okay, 365.242 days. The revolution speed of the earth is 30 किलोमीटर पर सेकेंड. s माइनस 1 का मतलब है पर सेकेंड, बाई सेकेंड नहीं लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे. Now see how the earth revolves. When the earth revolves around the sun on its orbit, it causes change of season. Just see here, I'm showing you the figure. Earth is moving from here to here. तो ये सितंबर में यहाँ से यहाँ दिसंबर में जा रहे हैं. जब ये सितंबर में यहाँ पर आया 22nd 23rd सितंबर, यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये ऑटम में आ रहा है, और जब ये दिसंबर में पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है. ये बीच का जो एरिया 22nd 23rd and 21st 22nd दिसंबर, इन बिटवीन वी हैव दिस ऑटम. From 22nd 23rd 21st and 22nd of December, when we move on to 20 and 21st of March, इस बीच में यहाँ पे ये विंटर था और धीरे धीरे ये विंटर खत्म हो रही है. तो जो पार्ट सामने में आ रहा है उसमें थोड़ा सा धूप है, सन के ठीक सामने में है धूप है, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. दैट इज वाई द सनलाइट इज रीचिंग लिटिल बिट लेस. अब यहाँ से यहाँ क्या होगा, सनलाइट बढ़ेगी. कौन सा सीजन आ जाएगा, स्प्रिंग. तो जून में आ रहा है. अब जून टू सितंबर अगेन वी आर कमिंग, देन वी आर हैविंग हियर समर, मींस टू हॉट. करेक्ट. दिस इज व्हाट इज here. But when I teach you about the northern hemisphere only, जब मैं northern hemisphere की बात करूंगी, क्योंकि अर्थ तो क्या है, tilted है, तो उसमें मैं आपको northern summer solstice बोलूंगी या northern winter solstice. जब मैं northern summer solstice बोल रही हूँ, उस समय southern में क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं समर बोल रही हूँ तो वहां क्या होगा, विंटर. वहां पे सन नहीं पहुंचेगा. दोनों उल्टा है, both are different. Just you understand with this. Just see what I have shown you on 21st June. Correct. Here what happens, when earth is moving this position, then the sunlight, the rays of the sun are vertical. Where? Tropic of Cancer. Tropic of Cancer इंडिया से भी क्रॉस करती है और ये वर्टिकल है. उस वक्त वर्टिकल है मतलब डायरेक्ट सनलाइट आ रही है. लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग द सन, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत गर्मी होगी. सो इन दिस हेमिस्फीयर मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ द डे इज देयर एंड द नाइट बिकम्स स्मॉल. करेक्ट. सो द ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेस. वेयर? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इट मींस व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. The Arctic Circle, as it is facing the sun for 24 hours, here what happened, they are saying that the region around the North Pole faces the sun for the period of 6 months. As the sun rays are more vertical and they have longer duration, this particular time they say it is summer season for them. This is called summer solstice. The situation in the southern hemisphere is just the opposite, I said. वहां पे धूप पहुंचेगा ही नहीं, तो वो विंटर सोलास्टिस. ठीक है. when we see here, summer solstice is observed in southern hemisphere because southern hemisphere comes in front of the sun. It means in the northern hemisphere we'll have winter solstice. Correct. So you should remember here, this particular time the sun rays are vertical at the tropic of कैप्रिकॉर्न. 21 जून में क्या था, वर्टिकल कहाँ था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और अब हम पीछे चले गए, हमारे यहाँ विंटर हो गया, उनके यहाँ समर हो गया. अंडरस्टूड? आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर. तो एंटार्क्टिक सर्कल जो है 21 जून के पास में हम देखेंगे पूरा डार्क में रहता है, सनराइज बहुत स्लैंटिंग है, उसके लिए वो विंटर सीजन ही रहेगा 6 मंथ्स. सो वी कॉल इट एज विंटर सोलास्टिस. सेम थिंग हियर, यहाँ पे क्या होगा, आर्कटिक सीजन पीछे चला. तो आर्कटिक सर्कल पीछे जा रहा है, तो आर्कटिक सर्कल में विंटर सीजन होगा, वहां विंटर सोलास्टिक होगा. सो इफ यू लर्न वन पोजीशन ऑन 21st जून, जस्ट द अपोजिट ऑफ इट इज ऑन 22nd डिसम्बर. जस्ट अगेन आई एम शोइंग यू दिस. ये तो हमने पढ़ लिया. वी हैव कंप्लीटेड दिस हियर 21st जून एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस डिसम्बर. दोनों एक दूसरे के उल्टे. आप देख रहे हो यहाँ पे भी, यू सी ऑन द ग्लोब द कंट्रीज व्हिच आर विजिबल. यहाँ पे डे था,
यहाँ पे देखो नाइट में चला गया, जो यहाँ नाइट में था इट हैज कम इन डे। यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे ठंड, ठीक। हियर इट हैज बिकम समर, हियर इट हैज बिकम विंटर फॉर दैट, क्योंकि यहाँ धूप पूरा लग रहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था, यहाँ क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, तो इसका समर है उसका विंटर, यहाँ क्या इसका समर उसका विंटर, जस्ट सीधा रिवर्स। कम टू दीज टू नाउ, ये मार्च इक्विनॉक्स और सितंबर इक्विनॉक्स क्या होता है, ये दोनों में आप फिगर पहले देख लो, देन आई विल बी शोइंग यू द स्लाइड। ये दोनों में हाफ ऑफ ईयर व्हेन इट इज हैविंग इक्वल डेज एंड नाइट, पूरा हाफ है, यहाँ इधर में क्या था डायरेक्ट सनलाइट ही आ रही, यहाँ पे पूरा इक्वल हाफ है, और इसमें they have equal days and night. Here क्या है, days are longer, night are smaller. यहाँ पे फिर इस समय days are longer, night are smaller, and that time we have winter. पर इस दोनों में all over the world everyone has equal day and night in each and every country. Just see the next slide. When the earth revolves and come in the position, that time the sun is shining vertically over the equator. अब equator के ऊपर light आ रही है, तो equator के ऊपर आ रही, equator is in the center, divides earth into two equal parts, so it means the days and night are becoming equal. So that particular time in both the hemisphere we have the same length of day and night, that is why we call it as equinox. When it is a position in northern hemisphere we call it as autumnal equinox, and when it is in the southern hemisphere we call it as vernal equinox. Same thing here on 21st March. Same here also. इस समय क्या था, इक्वेटर पे ही लाइट जला था, अभी भी कहाँ जाएगा, इक्वेटर पर ही जाएगा, यहाँ पे भी सेम 12 hours day and 12 hours night, again will have the same thing, but there is one difference here. North Pole has darkness for about 6 months, कब से कब तक, 23rd September to 21st March, ठीक है, और साउथ पोल में क्या होगा, लाइट इज। Here what happens, the North Pole has a sunlight for about 6 months. यहाँ पे क्या था, North Pole has darkness, here North Pole has sunlight, correct? And here they have South Pole has light during this period, here the South Pole has sunlight during this period. I hope so the things are clear. Just opposite ये दोनों का भी होता है, यहाँ North Pole में darkness है तो यहाँ South Pole में darkness होता है, इसलिए यहाँ North Pole में sunlight आ गया, उल्टा है दोनों. Now as it is very clear the position of the earth on the different dates of the year, and even we have come to know the rotation and revolution. Once again, just a short discussion of both. Rotation takes 24 hours for the earth, that is one rotation takes 24 hours, one revolution takes 365 1/4 days. Rotation causes day and night, revolution causes change of season, correct? So rotation and revolution both are important when we are studying about the position of earth on these 4 important dates. Remember, 23rd September and 21st March we have equal sunlight, it means day and night is equal for us all over the world. But if I speak about 21st March and 22nd September, these two are equal day and nights, okay, equinox इसलिए बोलते हैं. But when I talk about 21st June, the longest day in the northern hemisphere, correct? Here we have long days and short night. Here our night is long. You see India, हमारा night क्या हो जाएगा, यहाँ night लंबा हो जाएगा, और जब northern hemisphere में था हमारा night छोटा हो रहा था, क्योंकि हमारे ऊपर sunlight directly tropic of Cancer पे आ रहा था. I hope so the difference is also very clear. So thank you everyone.